Pakistan, a country of problems of mammoth proportions. From poverty to power politics, from population explosions to terrorist bombs, from corruption to disease epidemics. But Pakistan is also a land of heroes, where mountains meet and where mountains are moved to make a path. Our resilience tested many times, and we came on the other side with flying colors. Don't curse the darkness, light a candle. A shocking fact is that 16 million people in Pakistan are infected with either the hepatitis B or C virus. In 2005, there were a total of 12,000 cases of hepatitis B or C. In 2009, the figure has crossed 16 million. Every single day, hundreds of patients are dying across Pakistan, not by bombs, but by the hepatitis virus, a time bomb of a different kind. Our total health expenditure in terms of percentage of GDP is less than 5% on healthcare, whereas neighboring India spends more than 20% of its budget on healthcare. Hepatitis B or C is spread by the use of infected needles, razors, or body fluids. 1 in every 10 people in Pakistan is a carrier of hepatitis B virus. Hepatitis B virus is the main cause for over 60% of the liver cancer cases in the country. There is no cure for hepatitis B. That makes prevention all the more important. Out of 16 million people infected with the hepatitis B virus, 50,000 patients are in immediate need of a liver transplant, and the number is ever increasing. It is indeed a national tragedy that there's not a single liver transplant center in Pakistan. In Egypt, which has half the population of Pakistan, has 10 liver transplant centers. In India, there are 18 liver transplant centers across. 3-4 साल तो मुझे पता नहीं चला कि मुझे ये हेपेटाइटिस है। उसके बाद जो मुझे तकलीफ़ ज़्यादा होने लगी तो मैं डॉक्टर साहब के पास गई, तो उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस सी है आपको। तो उसके बाद इलाज शुरू हुआ, लेकिन 2 साल ट्रांसप्लांट से पहले मैंने बहुत मुश्किल में गुजारे, मतलब है बहुत तकलीफ़ देखी मैंने। हाँ, मेरे बेटे मुझे चाइना ले गए थे, वहाँ मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। बहुत बेहतर महसूस करती हूँ ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि पहले मुझे बहुत थकावट और दुखन और ज़रा सा कोई मतलब मुश्किल काम, मतलब सख्त काम करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती थी। मैं मतलब कोई ऐसा काम नहीं कर सकती थी, लेटी रहती थी, बुखार हो जाता था। मैं ये फ़र्क साफ देख सकता हूँ इनके ट्रांसप्लांट से पहले का और इनके बाद की लाइफ का। रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है। पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो भी बहुत अच्छा हुआ इनका ट्रांसप्लांट भी बहुत अच्छा रहा। ये जब चाइना से आई थी तो इनके थोड़ा बहुत जो था वो प्रॉब्लम चल रहा था, और वो यहाँ पे प्रेजेंट हुई इस्लामाबाद में ही, और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा पोस्ट ऑपरेटिव केयर इनका किया। ज़ाहिर है अपने मुल्क से दूर जाना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा इशू था। वीज़ा प्रोसेसिंग में बहुत से मुश्किलात आई इनिशियली। सेकेंडली यहाँ से पेशेंट को उस बुरी कंडीशन में वहाँ तक लेकर के जाना इज़ अनदर इशू। और तीसरा चीज़ जो है वहाँ पे कम्युनिकेशन का जो गैप है बिटवीन दी चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश मोस्ट ऑफ देम, वो एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। और सिमिलरली वहाँ की अकोमोडेशन, वहाँ का वेदर, वो भी हमारे लिए कंड्यूसिव नहीं है। डोनर में जब हम गए तो फॉर्चुनेटली हमें तो इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ, लेकिन ये कि आजकल उनकी गवर्नमेंट ने बहुत सी पाबंदियाँ जो है वो इन्फोर्स कर दी हैं, और अब वहाँ पे ट्रांसप्लांट बंद है, और फॉरेनर्स को तो वो बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करते। इसमें हमारा कोई 50 लाख खर्च हुआ, लेकिन ये वो अमाउंट है जो कि बाकी मसाइल जो हमने फ़ेस किए, जो यहाँ पे प्री ऑपरेशन जो हमने इलाज करवाया इनका, और जो पोस्ट ऑपरेटिव यहाँ पे सब कुछ हुआ, प्लस चाइना में जो रहने का, और ये उससे अलावा है। Cost of surgery in Pakistan would be less than 10 lakh rupees. Patients with end-stage liver disease on an average are spending nearly this amount on hospitalizations in intensive care units and the supportive treatment required, but with a poor quality of life, and the eventual outcome is dismal. Liver transplant is a cost-effective solution.
Liver transplant program can be started in any hospital of tertiary level care. But what you need is political will and commitment on the part of health managers and professionals. Regrettably, in Pakistan, liver transplant program has yet not started, and it is mainly because of misconception and misperception about liver transplantation in the minds of policymakers and also in general public. And this is about the issues like the kind of expertise you need, the kind of material resources you require, the cost, and the donor issue, and not at least the outcome. Many people think that patient hardly survive after liver transplantation. We can sort out all these problems by educating people and making the policy makers realize that liver transplantation is possible in Pakistan. About 90% patients survive 5 years or longer after liver transplant. Many patients who had transplant 35 years ago are still living. Thousands of patients are benefiting from this remarkable surgery worldwide. In liver transplantation, mainly 3 specialties are involved: surgery, hepatology, anesthesia and critical care. And all these specialties are well established in Pakistan. Another issue is that of cost. It has been proven in developed countries and also in developing countries that liver transplantation is quite cost effective. Regarding donor issue, fortunately we have now legislation in place which allows organ donation both by the deceased donors as well as by the living donor. SLOT, Society for Liver Diseases and Organ Transplantation. Be part of the solution. SLOT is the solution. SLOT is purely charitable, non-government organization working for the patients. SLOT is facilitating liver transplant program in Pakistan. Simultaneously, it is promoting organ donation. Members of SLOT include social workers, philanthropists, patients and their families, doctors and other health professionals, and anyone sensitive to the plight of liver disease patients. काला यरकान एक नहायत ही खौफनाक मर्ज है जिसकी स्याही सिर्फ मरीज ही को नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को निकले। क्या आपने कभी किसी को काले यरकान से मरते देखा है? मैंने देखा है। इतनी दर्दनाक मौत कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आइए हम सब स्लॉट का साथ दें और अपने फैमिली, अपने मोहल्ले के लोगों को इस मूजी मर्ज से बचाएं। The society's main objectives are to create public awareness about liver diseases, their prevention and treatment, to provide financial assistance to the poor and deserving patients affected by liver diseases and help them get their treatment, to spread information about liver transplantation and its role in end-stage liver disease and its current status in Pakistan, to help establish a liver transplant program in Pakistan, to promote organ donation in Pakistan, which is the backbone of any organ transplantation service. If we think that someone is going to come from outside and solve our problems, we are sadly mistaken. That's not going to happen. We have to solve our problems ourselves. The solution is in SLOT. Become a friend of SLOT.